Good morning, sir. Good morning. So today we are going to start. We will wind up that 2 hour session. And I will just introduce what is the big data and what are the different tools or what is the architecture of big data. After that, how they have developed the big data environment, or we can call it as Hadoop environment, and what kind of a things you need to perform as a big data development. So it will be part of next generation. So as of now, you have to be introduced by yourself because you have already aware about the ETL technology and what BI will do. So development perspective. So it is not that much from my side because I just highlight what the concept, how it will be utilized. But as a development perspective, you need to select a language like Python. You are already aware about that. After that, there was some replacement about the languages also. If you are not aware about the Python also, so you need to learn some like SQL concept, that is high query language. It is just like a SQL, and some pig Apache pig is there tool, and to operate that or to return that, to write that, we need to learn that pig scripting, that is pig Latin language. So these are the three parts we are going to start. So first we'll start with what is actually a big data. So already we are aware about the warehousing concepts, right? Already we have seen what actually the big data is. Sorry, warehouse is, because inside the warehouse we are having some limitations. Like if you're talking about the warehouse, there is a range. In that range, the data will be stored like 100 GB to 1 terabyte, or 1 GB to 100 GB to 1 terabyte. We can store, that is the range. But beyond that range, if we are having the data, if continuously, if you are getting the data, then where we to store? Where we need to store that data? That is the question. And for that, whatever the question we have asked ourselves, when the data warehouse limit has been completed and it is overflowing, the data is overflowing. Now the question arises where we need to store that data. Then the concept originated, that is called as a big data. Big data itself indicate that it is able to store a huge amount of a data. That is nothing but beyond that storage. If you want to store some data, then the concept called big data will be come into the picture. Okay, so already we have seen that ETL, why we need a ETL process, because ETL is nothing but if you want to combine a multiple sources from a multiple or different format, multiple sources we want to combine, we want to extract, we will apply some transformation rules and we are going to load that. For that, as a development perspective, you have a multiple ETL tools, and in that ETL tool, you need to develop some packages, sessions or batches. You have to develop from your side. After that, you are going to load that data into the warehouse. So when the data will be entered into the ETL process, then we have created a multiple layers like landing layer, staging layer. After that, we are having a warehouse layer. Oh, sorry, landing, staging. After that, at last, we are going to store the data inside the warehouse. That is the refined data. After that, we are going to use that data for a analysis purpose. Give me a sec. Okay, so already वो concept हमने पढ़ा है. This was the concept. Where I have stored. So simple. These are the sources. Multiple sources. We have this as a ETL process. After that, we are going to have a BI. But inside that, we are having a warehouse. This is a staging area.
and this is a landing area. So what we will do, multiple format sources, we will land inside the ETL approach. Okay, so these might be the sources. So we Hello, have sir. the inter. screen तो दिख रहा है। सर स्क्रीन लैग हो रही है। बिग डेटा दिख रहा है बस। नहीं, मैंने ये पूरा शेयर नहीं किया है, so sorry. So now it is visible, right? So already we have studied this concept. So no need to just I want to introduce कि big data क्यों important है and why we are shifting the gears to big data, because it is a storage only and storage perspective how we are going to store the data. So यहाँ पे multiple formats में data था, तो different formats में था, एक Excel में था, एक text में था, एक DB में था. But what we are converting inside in this ETL process, we have converted that data in one format. Just we have copied the data inside the LND, that is landing area. After that we have transformed that LND. यहाँ पे हमने copy कर लिया एक format में. After that we are combining inside the staging by using the staging, and this is your Data warehouse. After that we are having this as a PI. Now the concept is, अगर हमारे पास already data warehouse है तो इसका size is matter. If we are having like limited size, तो इसका size कहाँ से range करेगा? That is 100 GB. 100 GB to 1 terabyte, 1 TB. So this was the range what we have predicted for a data warehouse. That is the maximum range what we have. Okay. ओके, लेकिन अब इसके बियॉन्ड अगर रेंज में आ रहा है तो कैसे होगा? इफ यू आर ऑपरेटिंग सम ऑफ द एप्लीकेशंस लाइक बैंकिंग एप्लीकेशंस, और अगर आपका बैंक है एंड द बैंक हैज स्प्रेडेड ओवर मल्टीपल कंट्रीज एंड द डेटा इज गेटिंग larger and larger, and post COVID the data size is increasing tremendously and it is very difficult to store that data. So what we have did, one approach is just we are replacing this data warehouse with a concept called big data. But in that case, as a developer perspective, you need not to perform many operations. So one thing we need to perform, whatever the format of data is there, how we will extract this data warehouse data into this big data container. A container hai, no? Just as of now, you just remember this is a container. How will you extract? You have to develop, how will you integrate, and this integration and extracting the data and storage. Once we will storage inside the big data, how will you process that? All these things you need to perform as a development perspective, which is your first responsibility. How will you extract? That is nothing but extraction is nothing but यहाँ पे एक format में already data is stored. The thing is that you need to migrate that data inside the big data, because it is also a storage, it is also a storage, but it is having some limitations. It doesn't have any limitations. You can go to the zettabyte, whatever the petabyte maximum. There is no limitations inside in this big data. Why we will understand when we will step by step process करेंगे, then we will understand why we are calling it as a concept of big data. Then we need to replace. This is the first approach I am telling you. First approach is what? This is the post ETL process. We are migrating or we are converting this data warehouse into a big data container, and we are storing this data directly from a staging. We can move that data inside the big data because it has some limitations. Because of that, we are
migrating that data. This is the first approach. लेकिन यहाँ पे आपका concept कैसे रहेगा? You need to, as a development perspective, you need to integrate first. ETL process. Need to use called scoop. एक example, multiple tools are there, लेकिन ये ज्यादा यूज करते हैं. Scoop is a tool which is based on Hadoop ecosystem. Hadoop ecosystem बोल के ये support करेगा वहां पे. As of now, you just remember. After that, how will you store data in Hadoop? Container. That is nothing but this is the big data. How will you store? That will decide by your BA, that is business analyst. Business analyst will send all the details. That is nothing but they are creating a design document. Design docs, or in case sometimes many times BA is responsible. लेकिन sometimes they will ask developer to develop the design document. They will ask your approach. How will you do that? Means what kind of a implementation you are going to perform so that we can store that. But many times during the migration, this is a migration. This is migration project. ये कौन सा है? माइग्रेशन प्रोजेक्ट है. आपको एक मॉडल दिया जाएगा, ये डेटा वेयरहाउस में ऐसा डेटा है, इसको सेम एज इट इज वी हैव टू स्टोर इनसाइड द बिग डेटा एंड वी नीड टू इंटीग्रेट डायरेक्टली. वी हैव टू रिप्लेस इट. Going forward, we need to replace the data warehouse by big data containers. This is the requirement clearly. तो ये अप्रोच में इसका साइज छोटा है एंड वी वांट टू प्लेस दिस. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेशन करके डायरेक्टली लेना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमारा अप्रोच रहेगा इसका डेटा यहाँ पे माइग्रेट करो. तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? ये डेटा हमको माइग्रेट करने के लिए हाउ विल फर्स्ट वी हैव टू इंटीग्रेट विद डेटा वेयरहाउस. वी हैव टू लोड दैट कंप्लीट डेटा इनसाइड द बिग डेटा. नाउ once it is replaced, then directly we have to establish the connection from this to this part. ठीक है, तो ये replace हो जाएगा. This is the first approach. Means this is the post ETL process I am telling you. Now post ETL process हो गया. Just give me a sec. I will copy that diagram. Just one second. ये ड्रॉ नहीं करूंगा मैं, थोड़ा कॉपी कर. ओके, दिख रहा है मेरा स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. ये देखो, अब यहाँ पे आपका मेन काम शुरू होगा. माइग्रेशन के प्रोजेक्ट में ज्यादा काम नहीं रहेगा, जस्ट दैट इज द थिंग. दैट इज वन टाइप ऑफ अ बिग डेटा डेवलपमेंट और हडूप डेवलपमेंट. बट जब प्रोजेक्ट स्क्रैच से स्टार्ट हो रहा है एंड दे आर अडॉप्टिंग अ बिग डेटा टेक्नोलॉजी इन दैट प्रोजेक्ट, प्री ईटीएल, ठीक है, दिस इज अ प्री ईटीएल प्रोसेस. प्री ईटीएल प्रोसेस में कैसे होगा? यू हैव मल्टीपल डेटा सोर्सेस. अब वो डिफरेंट डेटा सोर्सेस कौन से डेटा टाइप्स को ये सपोर्ट करेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, स्ट्रक्चर डेटा, नॉन स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ऑल दोस थिंग्स वी विल डिस्कस लेटर. बट फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. यहाँ पे ये डेटा सोर्सेस है.
Now we have kept this source Hadoop. This is a container. After that, we are going for this ETL process. Then we are going for the target data warehouse. After that, we are this process from here to here. ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये देखो, यहां से ये जो प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस, दिस इज कंप्लीट नॉर्मल ETL प्रोसेस है, राइट? इसमें कोई डाउट है? ये ETL प्रोसेस, दिस सोर्स विल कम डायरेक्टली टू हियर, ओके, एंड दिस इज द नॉर्मल ETL प्रोसेस। लेकिन दिस इज द प्री ETL कंडीशन, दैट इज वी आर प्लेसिंग दिस सोर्स हियर। अब जो भी डेटा है, फर्स्ट विल स्टोर इनसाइड द Hadoop कंटेनर, उसके बाद में वॉट एवर द डेटा वी आर गोइंग टू प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे what we need to do, we have to integrate this sources to this Hadoop, means we have to load। यहाँ पे ETL टूल था, लेकिन यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन के टूल्स मिलेंगे Hadoop इकोसिस्टम में। तो those tools we need to use and we have to connect that by using that, and we have to extract that data sources into the source Hadoop। तो यहाँ पे हम डेटा इकट्ठा करेंगे, then we are going to process as per the requirement। और ये सारा चीज आपको डिसाइड नहीं करना है, whoever is creating or who is developing the project and whoever जो SME रहेगा, that is subject matter expert, or whatever the BAs business analyst, they are going to finalize the requirement, and as per that requirement जो भी document share करेगा उसके अंदर आपको snapshots रहेंगे, इस तरीके के वो डेवलपमेंट होना चाहिए। और ये आपको कोड लिखना है, whether they are asking to write inside the Python script, or whether they are asking to write in Hive, or whether they are asking to write in Pick। बट वंस द डेटा गेट स्टोर्ड, जब Hadoop में डेटा स्टोर होगा तो ये डेटा हमको यहाँ पे ETL में कैसे भेजना है, दैट वी आर गोइंग टू डिसाइड बेस्ड अपॉन देयर रिक्वायरमेंट। लेकिन यहाँ पे जब स्टोर होगा, वी नीड टू यूज दैट स्कूप एंड वी हैव टू इंटीग्रेट दैट डेटा एंड वी हैव टू लोड इट इन अ सोर्स Hadoop। तो ये प्री ETL प्रोसेस है। तो यहाँ पे काफी सारा डेवलपमेंट का जोन रहेगा आपको, एंड वी नीड टू डेवलप एंड वी नीड टू प्रोसेस। लेकिन माइग्रेशन में मीन्स as compared to this case, the migration जो हम यहाँ पे डेटा वेयरहाउस रिप्लेस करने वाले हैं, उस केस में आपको थोड़ा डेवलपमेंट कम रहेगा। लेकिन बिग डेटा का कॉन्सेप्ट सेम है। जस्ट आई हैव हाइलाइटेड द इंट्रोडक्शन बिकॉज वी हैव अ बेस ऑफ ETL एज वेल एज BI ऑलरेडी, वी हैव कवर्ड दैट कॉन्सेप्ट्स। क्लियर कैसे रहेगा? दिस इज द एक्चुअल आर्किटेक्चर ऑफ अ Hadoop डेवलपमेंट। ठीक है गाइस? Yes, sir. तो सर मीन्स हम जो SQL और नो SQL का डेटा है वो Hadoop सोर्स में लेते हैं पहले, और बाद में Yes, ETL प्रोसेसिंग करते हैं। यस, उसके बाद में ये प्रोसेस आपको Hadoop क्या रहेगा, Hadoop सोर्स रहेगा ETL के लिए। वॉट एवर द डेटा इज रिक्वायर्ड, यू कैन पुल दैट डेटा, उसके बाद में ये चलते रहेगा आपके प्रोसेस आराम से। हैं। सर फिर ETL प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर हम हाइव या पाइथन लैंग्वेजेस यूज करते हैं क्या यहाँ पर, नहीं, ETL प्रोसेस के इंस्टेड लिए ऑफ ये इन्फॉर्मेटिका देखो, वगैरह? ETL प्रोसेस के लिए टूल रहेगा ना आपका, इन्फॉर्मेटिका, SSIS, डेटा स्टेज तो रहेगा। फिर हम हाइव कहाँ पर यूज करते हैं, हाइव और Hive पाइथन? we have to here only, सोर्स में से डेटा निकालने के लिए वी हैव टू राइट। किस तरीके के टेबल्स बनाओगे, वो टेबल डायरेक्टली यहाँ पे लोड करोगे। हाइव टेबल्स, बिग टेबल्स, वॉट एवर द डेटा, आई विल टेल यू वेर यू आर गोइंग टू यूज दैट। ये प्रोसेस में कहाँ पे भी नहीं आएगा हाइव वगैरह, यहाँ पे आएगा। आई विल इंडिकेट दैट बाय रेड मार्क। So whatever the things I have highlighted by using red color, here only ये hive,
this hive and pig we are going to use. जब डायग्राम देखोगे आप उस तब पता चलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, दिस हाइव एंड पिग्स आर हियर ओनली, बट यहां से ETL प्रोसेस आपका नॉर्मल रहेगा. जो हमने अभी तक पढ़ा है ETL, टारगेट एंड VI, दिस इज द सेम एंड दिस सोर्सेस, बट वी हैव केप्ट इन बिटवीन अ Hadoop. Why we have kept? लेकिन यहाँ पे आगे जाके डेटा का इश्यू नहीं होना चाहिए स्टोरेज का. देन वी आर स्टोरिंग द डेटा एंड वी आर प्रोसेसिंग द डेटा हियर इटसेल्फ. Okay, why we need this in this place? You will come to know when we are going to see the concepts step by step. अभी याद रखो कि हम एक तो ETL के बाद में डेटा वेयरहाउस को रिप्लेस कर सकते हैं बाय यूजिंग Hadoop कंटेनर, या प्री ETL प्रोसेस में ऑलरेडी जो भी सोर्सेस है वो डायरेक्टली लोड करने के लिए हम यूज करेंगे Hadoop कंटेनर या बिग डेटा कंटेनर. इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes. Okay. Yes, sir. Now come to this part. So what is big data? So big data is nothing but is the data which is beyond the storage and processing capacity of a conventional database management system is called as a big data. A huge amount of a data is generated daily, not yearly or monthly. Petabytes and data generation rate is rapidly increasing because post COVID सारी चीजें ऑनलाइन हो गई. जैसे आपका हर एक ट्रांजेक्शन आपने डिजिटाइज कर दिया. जैसे पहले प्री कोविड के पहले प्री कोविड situations are like people are handling the cash also, they are going to ATM में रश होता था. नोटबंदी के टाइम में आपने देखा है, लेकिन नोटबंदी के टाइम से सारी चीज डिजिटाइज होती गई. फोन पे डेवलप हो गया, गूगल पे डेवलप हो गया, many UPI payment networks has been developed and every transaction needs to be recorded into the bank statement क्योंकि every penny is important. तो वो डेटा कैसे tremendously that is getting increased, but they are not thinking at the time of developing the application इतना डेटा लगेगा क्योंकि एक बंदा बैंक को कितने दिन आएगा. एक बार अगर पैसे विड्रॉ करके लेके गया तो after 1 week he will reach to the bank because at least normally before 5 or 6 years हम कैसे नॉर्मली बैंक को कैसे जाते थे, एक डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है. जब से ATM आया तो से हमने बैंक भी जाना छोड़ दिया. कभी तो एक बार 1000 रुपए 2000 रुपए ले लिए, that will be okay, but nowadays we are not at all withdrawing. अगर 5 रुपए भी पे करना है तो I'm paying from my phone pay or Google Pay, but that transaction if you are paying a 1 rupee also, that transaction has to be recorded. Means every transaction will occupy some amount of space, right? And you are not only the one user. Bank has millions of users and millions of users are performing a billions of transactions. Okay, at least in a day as a person, if you are staying outside, then you have some expenses, and you will spend all those things by using digital payments, and every record has to be recorded into that particular database, but database size is getting smaller and the content is getting increasing and it is very difficult to store. That's why we are adopting the concept of big data. ये तो पता है आपको, because what we have discussed till 15 or 20 minutes, from last 20 minutes we are discussing the same thing. But ये sources कहाँ से आए big data? Why we need a big data and why we have faced that kind of a situation? Because we are working in a different domains. आप अगर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपने सुना भी होगा, you are end of the course, already we have reached to the end, your duration has been completed. We are having multiple domains. What are those domains? Banking एक domain है, telecom एक domain है, insurance एक domain है. उसके बाद में काफी सारे डोमेन्स आएंगे, जैसे आपका लर्निंग डोमेन, हेल्थ डोमेन, बट मेन इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल डोमेन्स आर बैंकिंग डोमेन एंड टेलीकॉम डोमेन. So whatever the things we have developed and these projects required this big data kind of a concept because every information needs to be recorded. ठीक है, तो what are the different sources? Now here are the sources of big data: social networking and media, mobile devices, call, text message, location, in-app activity, because multiple apps you have downloaded on your mobile and each app is performing some kind of activity that needs to be recorded into that particular network. If you are operating, everything should be recorded. उसमें कितना useful information है, कितना नहीं है. After processing, whatever the useful information is there, we will extract, but we will remove that junk data. But
Before processing the data, it's our responsibility. We have to record each and every information. ऐसा फेसबुक कभी करेगा क्या? मीन्स इफ यू आर वर्किंग ऑन अ सोशल नेटवर्किंग साइट, 10 लोग, अगर आप 10 लोग का ग्रुप है फ्रेंड्स का, and 10 people are posting the good morning text message or good morning image on a Facebook, and out of that 10 only he will select only one, he will record only one. It doesn't like that, because everything should be recorded, everything should be stored. लेकिन out of which Facebook wants, अगर Facebook को लग रहा है कि इस 10 में से कौन सा मुझे इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस करना चाहिए, then that time they will analysis. Otherwise they won't. But everything should be recorded. आपके अकाउंट में जितना आपने 10 साल में पोस्ट किया सारा रिकॉर्ड रहना चाहिए, then only that application is getting popular. But how they needs to get that data to be maintained and that data gets to be stored. कहाँ पे मेंटेन करना? बैकएंड में कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा उसको, राइट और रॉन्ग? राइट सर। यस सर। तो उसी लिए ये स्टोरेज का मामला है, स्टोरेज हमारा कुछ लेस हो गया, उसीलिए उन्होंने क्या किया, बिग डेटा टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया, और ये मल्टीपल सोर्सेज की वजह से दैट इनोवेशन इज गेटिंग रैपिडली इंप्रूविंग. ओके, सो दिस इज व्हाट सोशल नेटवर्किंग है, मोबाइल डिवाइसेस है, इंटरनेट ट्रांजैक्शंस, might be a bank transactions, whatever the transaction, network devices and sensors, every information will be recorded, and that information will be stored somewhere, and from that stored information we want to analyze a data. Okay, that's why to analyze that data we need a concept of data science. Okay, that is already we are aware about. We need not to discuss about that. So we have a, अगर जितना ज्यादा डेटा होगा उतना हमारा एनालिसिस उतना ही मींस एक लेवल को जाएगा. जैसे आपने सुना होगा, आपका अगर 100 कस्टमर बेस है तो आपको सिर्फ 100 मेंटेलिटी पता चलेगा कि कैसे बिजनेस लॉन्च. अगर आपका कस्टमर बेस है 2 लाख and you have multiple personalities, multiple orders, then it will support you, or it will excite you to launch a multiple products for multiple persons. अगर आपके पास डेटा कम है तो एनालिसिस करके फायदा क्या है? 100 लोगों का डेटा इजीली आई कैन एनालिसिस, बट व्हेन वी आर हैविंग 2 lakhs of people, 2 lakhs of different personalities, then in that common matching personalities, उसके लिए क्या प्रोडक्ट चाहिए, इसके लिए प्रोडक्ट क्या चाहिए, इससे क्या होगा, हमारा बिजनेस ग्रो होगा. एट लास्ट एवरीथिंग depends upon, or everything totally reach towards the money. If we are not earning money out of it, that is nothing but business. Business is nothing but money. Everything is depends upon the business. If business is growing, why we are growing the business? Because we are having a huge amount of data and our analysis is good. If you are analyzing that data properly, and if you are launching your products and depends upon the analysis of your customer base, then only that product will survive, and it will give you the business out of it. ओके, दैट इज द बिजनेस स्ट्रेटजी. हर एक चीज में हम जो पढ़ रहे हैं, जो काम करेंगे, काम करने के बाद हमको पैसा मिल रहा है, राइट? व्हेन वी आर गेटिंग अ जॉब, वी आर अर्निंग अ मनी. आपको जो पैसा दे रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन आपको पैसा दे रहा है, वो भी अर्न कर रहा होगा, तभी तो आपको दे रहा होगा. व्हाई द पीपल्स आर प्लेइंग लाइक 13 lakhs per annum, 14 lakhs per annum? Because more than that they are earning. You are not only the one employee, they are having lakhs of employees in their organization. किसी का 10,000 कस्टमर बेस है, किसी का एम्प्लॉय बेस है, किसी का 5,000 है, but everyone is getting that amount of a salary. From where they are earning the money? Because they are implementing that kind of a technology, and that technology is surviving, that technology using by the end users, and from that end users they are earning that money, and they are distributing with us. Okay, now what are the different characteristics big data having? So it can occupy the size of data, that is volume. Here we are calling it as a 5 different types of V's adopted inside the big data. So 5 V's है ये. First V क्या करेगा? Volume. It will automatically store the volume of data. Velocity, that is nothing but processing speed of data is higher as compared to others. And variety, types of data, means we are having a multiple types of data. It can process structured data. But in the traditional or conventional databases, we are processing only structured data. Structured data is nothing but in terms of tables. How we are going to store the table? In terms of rows and columns. Okay. Now in big data, not only we can process the structured data, as well as we can process the semi-structured data. Semi-structured data is nothing but the data which is having some structure, but it is not in that format. Like आपका email हो या XML file हो, इनको कुछ एक टाइप का स्ट्रक्चर है, लेकिन वो 100% स्ट्रक्चर्ड नहीं है.
ठीक है, that is semi structured and unstructured is nothing but your audio files, image, video files. अगर आपके कस्टमर केयर में बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा है, that is IVR calls automatically originated, or and out of that if you have recorded some feedback from your customer, you need to store it somewhere in the database, and from that feedback only you are going to improve your customer care services. अगर कस्टमर के बहुत सारे कंप्लेंट आ रहे हैं and from multiple customers we are getting the same complaint, then we want to resolve that as possible as early so that we can reduce our customer complaint box, and that kind of a feedback we are going to get it, and that information needs to be recorded somewhere. And उसी तरीके का एनालिसिस करेंगे जब कस्टमर कॉल करता है, वहां पे एक वो विंडो रखा होता है, उनका क्या इश्यू है वहां पे रिकॉर्ड किया जाता है, वो डेटाबेस में स्टोर होता है. जब डेटाबेस में जाके हम एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके के इश्यूज आए थे, अगर हमने एक कॉमन इश्यू देखा तो उसको मैक्सिमम पीपल्स आर फेसिंग, देन वी विल हाईलाइट दैट टू दैट क्लाइंट एंड वी विल आस्क देम टू रिजॉल्व दिस फर्स्ट, बिकॉज lot of issues are related to issue 1 type, issue 2 type, issue 3 type. लेकिन issue 1 में एक near about we got 1 lakhs calls who are facing the issue 1, and issue 2 is only having only 1000 people. Then we will majorly concentrate. But when we get this feedbacks, when we get this analysis, when we have stored that data, and to store that unstructured data, we need a big data technology. If we have a big data technology, we have recorded that and we can process that and we can analyze that. और ये analysis करने के लिए on top of that we are having some tools. By using that tools, we are going to analyze the data and we will store that feedback into the database. Okay, this is what variety of data. After that, value. Value is nothing but whatever the data you are extracting or you are extracted from that big data or big data storage, that should be worth. अगर उसको कुछ वैल्यू है या वर्थ है, then only that will be helpful. Otherwise, अगर आप जंक डेटा यूज कर रहे हो या कुछ भी निकाल रहे हो, then that is not playing a vital role. But out of big data, we are getting the value of data because we have such kind of a processing on top of that. Next, veracity. Whatever the data we are extracting, that data, whether it is accurate, if it is accurate, then only it will be helpful. But we need to verify whatever the data we have extracted, is it worthy or is it accurate, that we need to decide. And these 5 different characteristics will be a major part playing inside the big data. That's why big data is getting popular. Okay. And if any data having these kind of a 5 characteristics, then that data is called as a big data. Next, ये है big data का classification, that is structured data, semi structured data, unstructured data. Already I have explained. Structured आपके जो normal tables में store करते हैं, semi structured XML email messages, unstructured video, audio and text files. Text files is nothing but not .txt. वर्ड फाइल हो सकता है, कुछ भी लिखा है रैंडमली, क्या भी लिखा हुआ है उसमें, टेक्स्ट फाइल भी हो सकता है, बट वी नीड टू फॉर्मेट दैट. दीज आर द चैलेंजेस. चैलेंजेस क्या है? कैप्चरिंग अ बिग डेटा, स्टोरेज, सर्चिंग, शेयरिंग, ट्रांसफर, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन. दीज आर द challenges when we are adopting the big data technology. Next, who has developed this one first? तो बिग डेटा का कॉन्सेप्ट इन 1990s गूगल के पास एक की झटके में बहुत सारा डेटा आया था, बट वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि इसको हम लार्जर डेटा दे हैव गेट एट दैट टाइम, सो हाउ वी विल प्रोसेस दिस डेटा. बट एट दैट टाइम they didn't find the solution, but they have started with this concept. What they have did, Google solved this problem using MapReduce algorithm. So this algorithm divides the task into smaller parts and assign those parts to a many computers connected over the network and collects the results to form the final result. तो जो अगर सपोज मेरे पास एक टास्क है, समझो अब मेरा टास्क क्या है, I need to count like मेरे पास 1000 लोग हैं मेरे पास, एंड इन दैट आई नीड टू काउंट हाउ मेनी पीपल्स आर ग्रेटर देन 40 एज, लेस देन 20 एंड इन बिटवीन 20 एंड 30 एंड इन बिटवीन, और उस रेंज में मेल कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, मुझे कैलकुलेट करना है. देन व्हाट आई विल डू, आई विल असाइन दिस टास्क टू इंडिविजुअल.
एक बंदे को मैं क्या करूंगा 1 to लेस देन 20 कितने लोग हैं और उसमें मेल एंड फीमेल क्या है ये तू कैलकुलेट कर एंड नेक्स्ट आई विल गिव 20 to 40 रेंज just calculate how many peoples are there and just distribute male and female, and after that the third task is nothing but greater than 40 how many peoples are there and distribute that task in terms of male and female and please share that. तो ये मैंने distribute कर दिया, that is nothing but मैंने map कर दिया पहले task. कैसे task map कर दिया मैंने? I will write it here. So first person I have given the task like just measure age whose less than or equals to 20 and differ in terms male and female. So this is the first person getting the task. And I have given a task greater than 20 and less than or equals to 40. Next. Age is greater than 40 and differ in terms of a male and female. So these three persons getting the task. तो इन्होंने क्या किया कैलकुलेट, ये मैपिंग हो गया. दिस इज कॉल्ड मैपिंग. Now we are adopting reducing. These are the two concepts combined together and they have created an algorithm that is called map reduce. Map reduce. तो reduce में क्या किया हमने, just map reduce के पहले क्या किया, shuffle किया या sort किया डेटा. We have sorted. तो फर्स्ट में क्या आ गया, फर्स्ट टास्क 1 कॉमा इसमें कुछ उसको 30 मिला. में उस कुछ को कुछ अराउंड 70 and third mapping got but 30, 45, 70, 55 and 60. So this will indicate male and this is female. Now inside the reduce, what script they have developed, हमको क्या चाहिए था, now we have to centralize, we have to reduce that. तो मुझे इसमें reduce कैसे करना है, ये तो मेरा total हो गया, I have given, लेकिन अब मुझे total numbers चाहिए, कितने females है और कितने males है. That's the my total motto. So I'm just adding these numbers and I'm going to collect it and I will show that. In this way, इन तीनों का रिजल्ट कंबाइन करके जो रिजल्ट आएगा दैट वी विल पब्लिश दैट इज नथिंग बट दिस इज द रिड्यूसिंग स्कीमा. ये मैप किया, आफ्टर दैट whatever the results we are going to get, we are reducing it. That is the concept of your map reduce. समझ में आ रहा है आपको गाइस? यस सर. यस सर. तो ये गूगल ने स्टार्ट किया था प्रोसेस, लेकिन इसके अंदर उसको सक्सेस नहीं मिला इन द 1990s. आफ्टर 13 years they got a success and they have developed a Google file system for storage. स्टोर करने के लिए उन्होंने क्या बनाया, गूगल फाइल सिस्टम बनाया. आफ्टर दैट फॉर प्रोसेसिंग दैट डेटा, जो डेटा उस स्टोरेज में स्टोर है उसको प्रोसेस करने के लिए खाली if you storing the data and if you are not able to extract the data, then what is the use of that storage? That is the question. Okay, आपके पास स्टोरेज बहुत बड़ा है बट आप उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते.
And what is the use of that? Okay. Then what they have did in 2003, they got a success. They have developed that processing approach, but they have not developed the process of storing. उसके पास प्रोसेस का डेटा प्रोसेस करने का अप्रोच मिल गया उनको, लेकिन उनको डेटा स्टोर कैसे करना है वो पता नहीं चल रहा था. Then they got a success and 2003 they have developed that Google file system. Google file system for storage and this map reduce for processing. लेकिन उन्होंने वो कॉन्सेप्ट डेवलप करके वहीं पे रख दिया. Later on one person in Yahoo, what he has developed HDFS, that is Hadoop distributed file system. And 2007 and 8 on top of that he has developed that map reduce. And his name is dog cutting. तो उसका एक बंदा कुछ वो इसका बेटा क्या एक एलिफेंट के साथ खेल रहा था. And that from that concept only he has given that because it's his patent and he has given the symbol of elephant to the big data. Now if you observe the structure of big data, everywhere you will find this symbol, elephant symbol. This is the story of your Hadoop. Okay. So अब ये Hadoop एक elephant का breed भी रह सकता है. You can find out that on Google. I'm not sure, but I'm aware about the symbol. Hadoop एक breed भी रह सकता है. देख लो आप. जैसे Python का है, right? यहाँ तक clear है? This is just an intro. Now, what is Hadoop? So to implement the big data technology or big data concept, they have developed a Hadoop. So Hadoop, which is developed in a Java-based programming framework that supports processing of a large data sets in a distributed computing environment. Distributed computing environment in the sense we will divide the data. अगर आपके पास बहुत बड़ा storage है, then we'll divide the data in multiple systems and we will process individually. After that we are going to combine. अगर डिवाइड कर रहे हो तो हमको मैपिंग बहुत जरूरी है. हम मैप करके डिवाइड करेंगे. After that, while combining, we will reduce it. That's why that concept has been worked. That is called map reduce. अब क्लियर है? तो आपको क्या करना है एज अ डेवलपर, जो मैप रिड्यूस का कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक वहां पे लगाया जाएगा, यू नीड टू डेवलप द स्क्रिप्ट फॉर मैपर, यू नीड टू डेवलप द स्क्रिप्ट फॉर रिड्यूसर. Okay, this is the development perspective. But before that, come to the point. So अभी ये Yahoo ने डेवलप किया था, लेकिन बाद में उसको टेक ओवर कर लिया पूरा चीज. Apache सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने किया है इसको पूरा, because many softwares they have developed only. So Apache ने कर दिया. उसके बाद में Hadoop uses commodity or cheaper hardware and it will be based upon the cluster concept. So commodity hardware, why we are calling commodity hardware? Come to this picture. तो यहाँ पे देखो commodity hardware, commodity hardware, commodity hardware. Because एक centralized system है, यहाँ पे जाके अगर प्रोसेस करोगे तो cost will automatically increase. If you are distributing, यहाँ पे slow system भी रहेगा तो भी चलेगा, because it is integrated to the centralized server. ठीक है, it is connecting by a LAN. जो भी प्रोसेस कर रहे हो automatically the centralized system can fetch. Once the data get processed, then it is no problem. तो अगर हम कहाँ पे यहाँ पे 1 GB RAM वाला भी यूज करेंगे, ये 3 सिस्टम, एंड दिस इज अ 10 GB, बिकॉज एट लास्ट वी नीड टू प्रोसेस द डेटा फ्रॉम हियर. सो द कॉन्सेप्ट इज दे हैव डिजाइन, और ये जो डिजाइन है हमारा कम्युनिटी हार्डवेयर, दीज आर द चीप हार्डवेयर. बहुत सस्ता हार्डवेयर हमने यूज करके यहाँ पे डेटा प्रोसेस किया, और ये जो 3-4 सिस्टम का एक सिस्टम इंटरकनेक्टेड है, दिस होल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज क्लस्टर. Cluster is nothing but group of systems which is connected to your LAN or whatever the cables you are using. जैसे centralized server को आप connect कर रहे हो, एक centralized रहेगा, एक admin रहेगा या central system रहेगा, उसको आप किस तरीके से connect कर रहे हो? Group of systems, how you are connecting to the main system. That is nothing but one cluster. एक cluster में आपने कितने system रखे हैं, that will define. And inside the cluster, every system is interconnected to each other. कैसे मैं बोलता हूँ इसको?
This is central system, but we have not connected it. So this is called as a cluster. Inside this cluster, this is one system, this is one system, this is one system, this is one system, this is one system. Now it is integrated to these systems. This is directly communicated. तो ये आपका सेंट्रलाइज सर्वर है, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है, सेंट्रलाइज सिस्टम्स. And this is one cluster. So it might be located here, it might locate outside, it depends. ठीक है. So इसका डिजाइन उस तरीके से बनाया गया है, whatever the Hadoop is there. So Hadoop is used commodity cheap hardware and cluster concept, and recommended. This Hadoop is recommended for what? Large or huge data sets. Clear है ये guys? Yes, sir. Now come to the Hadoop architecture. So inside the Hadoop, we are having only two core components. One is MapReduce. That MapReduce किस लिए use करते हैं? Already I have explained. Okay. And HDFS. HDFS is a special kind of a file or special kind of a file service which stores the data. So MapReduce processing data which is stored on HDFS and storing a huge data set inside the HDFS. These are the two core components inside the Hadoop architecture. Now we'll see one by one what is HDFS file system. So HDFS is a special designed file system. Basically, main purpose क्या है इसका? It is used to store the huge data set. But how we are storing that? By using a cluster of commodity hardware with streaming access pattern. So streaming access pattern is nothing but once you have stored the data, you can read it many times, but you can't change it. That is this concept. WORM. That is write once, read many times. This is what your streaming access pattern. Already I have explained commodity is nothing but cheap hardware. Cluster is nothing but group of systems connected to the LAN. Because of that, we are calling it as a HDFS is a special designed file system because of this important features. Okay. जैसे आप YouTube पे करते हो, YouTube पे कैसे रहेगा? आप अगर एक बार आपने वीडियो अपलोड किया, उसमें वीडियो में जाके तो चेंज नहीं कर सकते, वीडियो को एडिट नहीं कर सकते, लेकिन वीडियो बार बार देख सकते हो. लेकिन वीडियो बनाते टाइम ही आपको डिलीट करके हर एक वीडियो बनाओगे तो चलेगा, नहीं तो उसको वीडियो को एडिटिंग करना पड़ेगा. बट इफ यू हैव डाउनलोडेड ऑन द यूट्यूब, उसको एक तो रिमूव करके एडिट करना पड़ेगा, फिर से अपलोड करना पड़ेगा. लेकिन एक बार आपने अपलोड कर दिया, देन यू आर नेवर एवर एडिट ऑन द यूट्यूब. दैट इज नथिंग बट द स्ट्रीमिंग. ओके. यस और नो? Yes, sir. Understand. इस सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना? No, sir. No, sir. नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर. Okay. Now, why Hadoop is specially designed file system? तो ये क्यों भाई इतना Hadoop हम बोल रहे हैं, और इसमें ऐसा क्या खासियत है जो कि बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करता है. तो नॉर्मल फाइल सिस्टम और Hadoop में क्या डिफरेंस है? दैट इज अ ब्लॉक ऑफ स्टोरेज. तो नॉर्मल फाइल सिस्टम में हम कैसे स्टोर करते हैं? वन ब्लॉक इज हैविंग 4 किलोबाइट्स. इफ यू आर रिलेटेड टू कंप्यूटर बैकग्राउंड और इफ यू हैव यूज्ड एनी काइंड ऑफ, अगर बेसिक कंप्यूटर आपने जिंदगी में कभी तो पढ़ा है, तो ये मेमोरी का अगर कॉन्सेप्ट वहां पे आया है, इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन दैट कंप्यूटर सब्जेक्ट, देन यू विल अंडरस्टैंड. तो अगर आपने डेटा स्टोर करना है नॉर्मल फाइल में, तो वहां पे ब्लॉक्स कैसे रहेंगे? 4 KB का एक ब्लॉक. अगर आपके फाइल का साइज है समझो 20 MB और 20 KB, तो 20 KB या 22 KB है, तो 22 KB के लिए कितने ब्लॉक्स लगेंगे? 4 5 जा
20, 1 2 3 4 5, 5 और प्लस ऊपर के 2 KB के लिए 4 KB। लेकिन जैसे नॉर्मल फाइल सिस्टम में कैसे होता है, अगर आपके पास 22 KB डेटा है, समझ लो आपके पास 22 KB का फाइल है, तो इसके लिए कितने ब्लॉक्स लगेंगे मेरे को? हाउ मेनी ब्लॉक्स आई नीड? एक ब्लॉक है, 1 ब्लॉक 6 ब्लॉक 6 into 4 कितना हो रहा है? 20. 24 मेरा एक्चुअल साइज कितना है? 22 KB। तो यहाँ पे नेसेसरी मैं एक्स्ट्रा प्रोसेस कर रहा हूँ, तो नॉर्मल फाइल में स्टैटिक स्टोरेज मेरा फाइल प्रोसेसिंग, it won't release that unnecessarily. It is going to create the burden for that 2 KB of space and it will process that. लेकिन यहाँ पे this is the HDFS file system. So Hadoop में we are having different versions 1.0 और इसमें भी बहुत सारी वर्जन्स आ जाएंगे 2.0। जब 1.0 था, इसका मेमोरी ब्लॉक था, you can imagine 64 MB and that has been increased in Hadoop from Hadoop 2.0 version से 128 MB। और now you can imagine, तो 1 block size is equals to 128 MB। अब मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कितना होगा यहाँ पे? कितने ब्लॉक्स एक HDFS के ब्लॉक में कितने ब्लॉक हम डेटा स्टोर कर सकते हैं नॉर्मल फाइल का? और यहाँ पे अगर आपका फाइल का साइज है समझो 300, ठीक है, 300 MB। In that case, how many blocks are required? 128 MB. 3 blocks. 3 blocks, sir. 3. Blocks. So one block contained 128. Second block contained 128. कितना हो गया? 256। और बचा कितना थर्ड ब्लॉक में? 44। मीनिंग 44 माइनस करो इसमें से, कितना बचता है वो? That is 84। Okay, so 84 MB it will release and it can be used for another storage. So that's why it is called as a design. हाँ बोलो क्या? फिर रिलीज कर सकते हैं, यानी फिर वो डायनामिक ही होगा ना फिर पहले? हाँ ये डायनामिक हो गया। ओके से दैट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसीलिए दैट इज व्हाई द बिग डेटा इज गेटिंग पॉपुलर। एक ब्लॉक में आप इतना डेटा स्टोर कर सकते हो, तो मल्टीपल ब्लॉक्स एक्सेस करने के लिए जितना आपको प्रोसेसिंग स्पीड लगेगा, बिकॉज यू नीड टू इंटरकनेक्ट ईच एंड एवरी ब्लॉक। एक ब्लॉक को दूसरा इंटरकनेक्ट करना, तीसरा इंटरकनेक्ट करो, चौथा इंटरकनेक्ट करो। तो 4 KB का अगर 128 फाइल का स्टोर करना है तो कितने ब्लॉक स्टोर करना पड़ेगा नॉर्मल फाइल सिस्टम में, वो देखो। और यहाँ पे अगर मेरा पास 128 MB का डेटा है, 127 MB का डेटा है, then I can store it in one block। और one block एक्सेस करने में कितना टाइम लगेगा? As compared to this, very less time, fraction of a time or fraction of a millisecond we can access that data. That's why big data का processing speed भी उतने ही fast है। Now it is clear or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now next is, this is the same explanation. Now HDFS, whatever the HDFS is there, it will provide a 5 different types of a service, or we can call it as a Hadoop will provide 5 different types of a service. So those are
some of them are categorized in master services, some of them are categorized in slave services. तो यहाँ पे ये ऑपरेशन कैसे करेगा? सेम थिंग ओके, इस तरीके से रहेगा. नेम नोड, जॉब ट्रैकर, डेटा नोड, टास्क ट्रैकर. नाउ these are the 5 different types of services. ये मास्टर नोड के सर्विसेज है. This is your and this is slave node. So we are calling it as the daemons or services. And these are the 5 special kind of a services which is going to provide by the Hadoop. So name node, job tracker, data node, task tracker. Now this name node map reduce is job tracker and task trackers सर्विसेस. अब देखो, जब नेम नोड को कम्युनिकेट करना है स्लेव नोड से, इट विल कम्युनिकेट टू द डेटा नोड. अब डेटा नोड क्या करता है, नेम नोड क्या करता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे हडूप में कैसे रहता है,
एक्चुअल डेटा विल बी स्टोर्ड इनसाइड द डेटा नोड। जो आपका डेटा स्टोरेज होने वाला है वो डेटा नोड में होने वाला है, लेकिन जो डेटा स्टोर हुआ है उसका इंफॉर्मेशन कहां पे स्टोर रहेगा? नेम नोड में। समझ में आ रहा है?